for the construction of history and the rational scientific analysis of the events and the moral values and historical responsibility of the historian and the ruling class are very much necessary for the construction of history. Okay, but it is unfortunate and true that due to the combined conspiracy of the casteist and biased ruling class and historians of Indian subcontinent, the practice of anti-caste history in Indian subcontinent has remained backward. Okay, so anti-caste icon like Jagannath Mandal erased from the history of Indian subcontinent. His ideas, his thought has been misinterpreted and misrecognized by the historian and the ruling class. Okay, so in event of the information distortion, misrecognition, Jain Mandal has been neglected in the history of the South Asia. So the false narrative has been set in the public memory that he was the main villain of the partition of Bengal and one of the perpetrator of the Hindu killing, and he all the time alliances with the Muslim League or the Islamic ruler. But what actually he was? So that is our main point. What actually he was? Okay, so he was the 4 times cabinet ministers, 2 times cabinet minister in undivided Bengal, and he was the interim law minister of the interim government of India, and law, labor, and Ministry of Kashmir and Commonwealth Affairs in the independent Pakistan. Right. So he he was born on January 29, 1904 in Borisal district of undivided Bengal. Mondal established himself as a lawyer, ignoring the severe caste discrimination and financial hardship prevalent in Bengal at that point of time. Okay, so on July 1936, he joined the Borisal subdivision court, and this year he became member of the Borisal subdivision local board. And in next year, 1937, he became member of the district board. So the turning point of the Indian politics was 1937 general election, right? Where Jain Mondal defeated Sarol Kumar Datta, an influential Congress member from an undeserved seat. Okay, so the politics and the political strategy of Mandal was basically against the monopoly of the so-called Bhadalok or influential political group. As a result, Jain Mandal always strived to establish an independent lower caste political entity in India, which would act as a political counterbalance and pressure group to protect the educational, social, economic, and political interest of the lower caste community. Right? So that was his charismatic leadership, or that was his politics. Okay. So the question is the why he joined the Muslim League ministry. All the time people blame that why he joined Muslim League ministry. Okay, in for clear understand, in 1940, the then Prime Minister of Bengal, A.K. Fazlul Haq, supported the Lahore
proposal, Lahore proposal of Pakistan, right? While Mandal opposed that proposal. And in 1903, it is very interesting that in 1938, he formed Independent Scheduled Caste Party within Bengal Legislative Council. Okay, and this is a very interesting fact. People do not care about that. In 1943, Fajrul Haq and Shyamaprasad Mukherjee was alliances in Bengal. In other words, Muslim leagues and Hindu Mahasabha alliances and form a government in Bengal. This is a very interesting fact for the first time, right? So, in 1943, the Fajrul Haq government was dissolved, and Najimuddin government formed in undivided Bengal. And Jogendra Nath Mandal joined Muslim League's ministry. But what was his demands? Right? So, first of all, his demand was three ministers and three parliamentary secretary from scheduled caste community, and 5 lakh annual grants for the scheduled caste community, and the reservation in government job and educational institution. For the first time in Bengal public policy, that the reservation was introduced in Bengal for the first time in the government policy, which was possible for Mondal charismatic leadership, right? And also the subsidy plan for the poor farmer. That was his demands to join the Najimuddin government in 1943. That's why he joined the Muslim League ministry. For similar thing that happened in 1946, he joined the Hussain Sai Salahuddin's government for the interest of the lower caste people, not for his own political gain, not for his own interest, for the lower caste people, right? So that's why he joined the Muslim League ministry. And another question is viewed in public memory, that what role he played to Dr. Ambedkar into the Constituent Assembly. What was actually his role? Okay, so it would have been impossible for Dr. Ambedkar, the chairman of the drafting committee of Indian Constitution, to reach the Constituent Assembly if Jagannath Mandal had not managed to win from Bengal. Its sole contribution goes to J.N. Mandal. We enjoyed equality, liberty, representation, freedom at present, but his sole contribution also goes to the J.N. Mandal. Okay, so J.N. Mandal was the then president of the Bengal branch of the All India Scheduled Caste Federation, which founded by Baba Saheb Ambedkar in 1943. As per the rule, to elected to the Constituent Assembly, the support or vote of the 5 members of the Legislative Council is needed. Was needed, right? Like today's Rajya Sabha member are elected from the MLS vote. So similar kind of thing happened in Constituent Assembly election, right? So vote of the 5 members or the Legislative Council is needed for the Constituent Assembly. But in 1946 general election, All India Scheduled Caste Federation suffered a disaster. Dr. Ambedkar lost from his own constituency. J.N. Mondal was the sole or one and only
elected representative of the scheduled caste federation in all India. Right. So how it was possible for Baba Sahib to go to the Constituent Assembly? Actually, it was impossible thing that, because all India's scheduled caste federation has a only one member. But if anyone go to the Constituent Assembly, he should vote. He should supported by the 5 members of the Legislative Assembly or Council. It was actually impossible. But Mandal tried hard to secure Ambedkar to the Constituent Assembly. He constituted with many independent and Congress SC scheduled caste MLCs or member of Legislative Council who won from the SC reserve seat. His charismatic leadership helped convince them why or how it is important to vote to Baba Sahib Ambedkar. Right. So in 1946, when result were announced on 19 July, Baba Sahib was elected to the Constituent Assembly from Bengal by getting the maximum number of votes. Okay. He got 7 votes. All are from the scheduled caste community. All MLC or the member of Legislative Council of Bengal, all are from the scheduled caste community. Okay, because they were won from a scheduled caste reserve seat. So that was personality Mondal had. Okay, so this sole contribution goes to J.N. Mondal. Their charismatic leadership and convenience power to the people community, it was fantastic, right? So which is very important thing that. Okay, so that's why he called Mahaprana. Okay, the great soul. So our next question is that, did he oppose the partition of Bengal or he support the partition of Bengal? So when the question of partition of Bengal arised, always people blame Mandal that he was main architect of partition and he went to Pakistan to become a minister. But this is completely false narrative and false information. Okay. Because when the news of partition of India spread, the then Law Minister of India, J.N. Mandal, started strongly criticizing the partition plan and held various meetings about the evils of this partition. Okay. He provided the united, or his team was the United Sovereign Bengal, which was supported by many Congress leaders like Sharat Chandra Bose, who was the elder brother of Subhash Chandra Bose. Okay, and for partition, he prescribed 2 solutions for the partition of Bengal. Number 1, referendum, and number 2, the exchange of people, who is supported by Baba Sahib Ambedkar, which happened in Punjab, right? But no exchanging of people happened in partition of Bengal, and no referendum happened in Bengal, right? But India was partitioned without consulting any of the scheduled caste or lower caste or scheduled type or OBC leaders. Even Baba Sahib was excluded from any kind of policy making or consulting process of partition. Okay. So disappointed Mandal, consulting with Baba Sahib, what will his political destiny? He went to Pakistan following the advice of the Baba Sahib to, protect the rights of the backward caste
and minority people in Pakistan. Okay, because because there was no option for Mandal, and Baba Sahib also tell him that he should go to Pakistan because there is no option for us. Okay, so in Pakistan he was labor law and Minister of Kashmir and Commonwealth Affairs, right? But the tragedy was after the death of Jinnah in 1948, Liaquat Ali Khan became omnipotent. Since then, no importance has been given to the rights of the minorities and the lower caste. The state sponsored terrorism against the lower caste minorities were harsh reality of that time. Riots take place in different parts of Pakistan, and J.N. Mandal was under state surveillance. So that was the situation of J.N. Mandal. He was all the time surveillance by the Pakistani state, which spearheaded by the Liaquat Ali Khan. So that was the reality, right? So he went to various right affected areas and quell many rights, but that is irony that that in Indian subcontinent, peaceful thinker or leader is M.K. Gandhi, not Baba Sahib Ambedkar or not Jogendra Nath Mandal. Okay. So from 1949 onwards, he wrote various letters to Nehru and at that point of time, Chief Minister of Bengal, Bidhan Chandra Roy. So that's the minorities and the lower caste of East Pakistan can be given shelter in India because Pakistan was not safe for them. But the Indian government did not respond in that way. So he was forced to leave Pakistan and resigned from the cabinet. Okay. So next we will talk about his contribution to refugee movement and upward mobility of the scheduled caste and lower caste communities. Okay. So after returning from Pakistan, he joined refugee movement in India and began to oppose the government refugee policies as refugees from Bengal were relocated to, to isolated areas in Odisha, Chhattisgarh, Andaman Nicobar Island, and Maharashtra. He opposes these policies because these refugees have a different language, different food habit, different climate. So they cannot survive in these remote areas. So many times he was arrested by the police for spearheaded the refugee movement in India. And it is very interesting fact that many people do not have any idea about clear idea about the 1965 Lokur Committee report. Actually, that committee was set up by government of India to exclude some community which is so-called progressive community according to the government from the scheduled caste and scheduled tribe list. Okay, like today's subclassification, which was introduced by the government of India, headed by B.N. Lakur in 1965. And this committee excluded various community like Namashuddas, Rajbangsis, Suri, Dhobi, Mahar, Chamar, etc. community excluded from the SC and ST list.
But J.N. Mondal was one of them who opposed this conception and met with the Prime Minister of India and President of in India that this committee should be dissolved because this is not a verified document and this is not a scientific justification that so so after that various movements and opposition this committee was dissolved by the government of India. So, so that was his character and after returning in India, Baba Sahib founded the social and political school in Nagpur. He in 1956 he joined the RPI of Baba Sahib Ambedkar. And after returning from Pakistan, four times he lost the election as an independent candidate. Okay, but after before that election, he died mysteriously in 1968. So that was his journey, his conception, his charismatic leadership to scheduled caste, lower caste, backward caste, upward mobility. Right. And one is very important thing that the women rights in India, the champion of women rights in India called Baba Sahib. Yes, but the women rights bill and various others things related to women rights also combined by Jogendra Nath Mandal and Baba Sahib for the establishment of the women rights in India when he was the law minister of interim government of India. Okay, so thank you for my 20 minutes discussion. बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने जोगेंद्रनाथ मंडल जी पर इतनी प्रेरणादायी बातें की और हमें 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 एनलाइटन किया। आपने न केवल उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में रेखांकित किया, बल्कि भारत के जो तथाकथित इतिहासकार है, जो भद्रलोक इतिहासकार है, उनके द्वारा जो फैलाए गए मिथक है और झूठी धारणा है, उनको भी पर्दाफाश किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना टाइम निकालकर हमें इतनी सारी जानकारियां दी। तो अभी हम हमारे जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी गूगल मीट को हम ओपन रखेंगे, तो जिनको भी कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी पार्टिसिपेंट पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपना हैंड रेज कीजिएगा और हम उनका नाम लेंगे और वो अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। चंदन, प्लीज हेल्प मी विथ दिस। Okay, few people are raising their hands, so you can check their name one by one. Actually, it's not visible in my phone. Please do it from your side. Okay, Rupam Hajarikada has raised his hand, so I would like to ask him to put his question on. Please. Yes, Zardin friends. I would like to ask a question to Suvajit. Suvajit, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जोगिंदर मंडल जी ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में गए थे वेस्ट बंगाल में, तब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भट्टर लोगों का बंगाल के उनके प्रति व्यवहार डिड दे सपोर्टेड हिम और टू आगे बढ़ने पॉलिटिक्स को आगे रखने के लिए वहाँ पे जो शोषित वर्ग थे उनको आगे ले जाने के लिए या उसको या मतलब कैसा व्यवहार था उनका अपर कास्ट लोगों का, मतलब भट्टर लोगों का, मैं जानना। Okay, all the time they were against Mondal because Mondal's politics was very different kind of politics because his politics and political strategy in all the time in undivided Bengal, in independent Pakistan, and in independent India, all the time he was basically
against the monopoly of the so-called Bhadralok or influential political group. Okay, so that's why all the time they are against Mandal. All the time they are blaming Mandal that uh, he do this, he that. So that was his politics, because his politics was starvation of the lower caste people. Yes, yes, Bhabdullah or intellectual class of Bengal all the time opposed him. Okay. Manojit Vishwa, please on your mic. Yes. Hello. Jai Bhim. Good evening to all. I would like to thank the Suvajit Mandal for his elaborating information on Mahaprana Jogendra Nath Mandal, sir. Sir, I would like to. I have 2-3 questions on the most unfortunate leader of South Asia, as you mentioned, sir. And on the inaugural speech by Hemant Bhai, you said that he is from Malkangiri, and I also belongs to Malkangiri, and I am also from a Namashudra community. सर मेरा एक है कि लास्ट 6 to 7 years I am personally as a profession I am an engineer, but I am actively involved in social movement of our marginal communities. So last 7 years or 7 to 10 years I am studying about Mandal ji from many sources or articles. तो जैसे आपने बताया कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी मतलब हमारा जो राइट विंग पार्ट है वो ऑलवेज एज ए विलन उनको एक इमेज बना के रखे हमारे सोसाइटी में। तो मैं एज ए नवशूद्र कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ मालकानगिरी में। जैसे वो हेमंत सर ने बताया कि मोस्ट ऑफ द 95% पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसमें सबसे बड़ा क्रूशियल जो मेरे कम्युनिटी में मैं बातचीत से मेरे को पता चलता है कि वी प्रोजेक्टेड हिम एज ए विलियन फॉर द सर हाँ सर थोड़ा शॉर्टली अपना सवाल ही रखिए क्योंकि बाकी मेरा लोगों को भी सवाल चांस देना पड़ेगा। यस यस जी जी तो इसमें सर ये सुवजित सर जैसे उनके ऊपर पीएचडी किए तो मेरा रोल है कि जो बंगाल का जो पार्टीशन है ना वो सबसे डिस्प्यूटेड है। तो मेरा टू द पॉइंट 2-3 क्वेश्चन है कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने के टाइम बंगाल का जो 3 ये था खुलना जसर बरिशाल वो इंडिया में आना था लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो उस टाइम रेड क्लिफ कमीशन जो बना था तो मेरा है कि इनिशियल बाउंड्री डिसाइडिंग फैक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन था जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जो खुलना जसर बरिशाल इंडिया में ना रह के पाकिस्तान में क्यों चला गया। तो इन दैट में जोगेंद्र नाथ मंडल जी का कोई था क्या मतलब ओपिनियन था कि उनका कंसेंट लिया गया था नहीं लिया गया था। एक फर्स्ट क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है मेरा कि जो जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जो यूनाइटेड बंगाल का जो कंसेप्ट था देखो इंडिया पाकिस्तान जो डिवीजन होना था कंफर्म था। अगर यूनाइटेड बंगाल अगर कंसेप्ट रखे थे तो वेदर इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया और इट विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्या कंसेप्ट था। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये पार्टीशन के टाइम जैसे पाकिस्तान पंजाब का डिवीजन हुआ था बाबा साहब का इंटरवेंशन था। तो हमारे बंगाल में जब पार्टीशन हुआ था बाबा साहब का इंटरवेंशन किस लिए नहीं था और जोगिंद्र मंडल जी का कितना इंटरवेंशन था और जो फॉरवर्ड पॉलिटिक्स जो चल रहा था कांग्रेस का उनका इंटरवेंशन क्या था। तो बाबा साहब क्यों इंटरवेंशन नहीं किए क्योंकि देखिए पार्टीशन होने के बाद सबसे ज्यादा जो पीड़ित है ना ये नमशूद्र कम्युनिटी है। वी आर द सफरर। तो हमको रियल हिस्ट्री चाहिए कि बाबा साहब ने क्यों इंटरवेंशन नहीं किए थे दैट टाइम कि पाकिस्तान पंजाब में जैसा हुआ था ऐसा बंगाल में क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। ये 3 क्वेश्चन है मेरा तो जिसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ मतलब टू द पॉइंट आंसर चाहिए मतलब एकदम अनबायस्ड आंसर। जी सर हो गया सर। जी सर यस जी सोच सर। Okay.
Okay. First of all, the partition of Bengal was a very unfortunate thing that. So partition of Bengal में किसी भी लीडर बंगाल का और इंडिया का जो लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता उसका कोई भी ओपिनियन नहीं ले रहा था कोई ओपिनियन they are not used. Okay, they are not consulting them anything that which will be the gate for the Bengal or any kind of discussion regarding partition. Right? Okay, you talk about Khulna Jasar. Any kind of opinion hasn't been taken from any leader from the lower caste community, like Jogendra Nath Mandal. Okay, number two, his conception of sovereign Bengal, and that okay, it was not. No, sir. Hello. My question is sovereign and Bengal concept is okay, fine. Okay. But partition was inevitable. Means Pakistan India तो होना ही था. तो sovereign and Bengal अगर concept आता तो क्या 3 country बनता, एक Bengal, एक Pakistan and one India, और Bengal is a part of India और undivided Bengal is a part of Pakistan. 3 scenario बनता है. तो इसमें क्या discussion हुआ था उस time, वो जानना चाहता हूँ. Actually, his conception was independent Bengal. Like, independent Bengal means it is not a Pakistan or it is not a part of India. Please let him complete. हाँ, बाद में बता देना. That was his conception. That yes, that was his conception. Independent Bengal, sovereign Bengal. That was like a state. No, sir. मेरा एक question है कि state or country? Country, right? Country. Yes. Okay, fine, sir. And number 3, that the Baba Sahib was not very much consulting with the partition of Punjab. I told everything about partition. Right? Partition means there is no consulting with any lower caste leader of scheduled caste, right? Any lower caste community of India. That it is. I don't know whether you know that Baba Sahib was involved in the context of partition of Punjab. I don't know. I don't have any information about that. The Baba Sahib was involved in the partition of Punjab or any kind of exchange. But Mondal was very clear that the conception of if partition happened, there is 2 situations arise. But he described 2 situations. Okay, number 1 is सर आपका माइक ऑफ हो गया. सुबह सर. okay, which was not interested by the upper caste leader. So that point of time, consent was not very much. He was not connected with this kind of thing. That okay. तो हम अगले सवाल पे जाते हैं. माधव मैडी, अपना माइक ऑन कीजिए. हेलो. Yes. हाँ बोलिए. हेलो आवाज एवरीवन. आ रही है. एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है. मैंने देखा नहीं, मेरा जो हैंड का बटन है वो प्रेस हो गया था. तो ओके, ठीक है. प्लीज कंटिन्यू एंड प्लीज फॉरवर्ड द माइक टू नेक्स्ट वन. प्रद्युम्न बाग. सॉरी सर, मेरा माइक टच हो गया था सर. अच्छा ठीक है. हेलो. हाँ ठीक है सर. सौम्यदीप मंडल ने बहुत देर से हैंड रेज किए हैं. उनके बाद मधुरी मैम.
yes. मेरा ये कहना था कि आप जो बोले थे कि ये जो फॉल्स नैरेटिव हम लोगों के अंदर ये तैयार हुआ है, मेरा सिर्फ यही छोटा सा एक तो क्वेश्चन है, जिसको मतलब हम लोग कैसे तोड़े कि और जो आम इंसान है जो इन लोगों के अंदर मतलब कैसे अवेयरनेस फैलाएं जैन मंडल के बारे में। Okay, because it's about historiography, so constructs, so new construct करना होगा हिस्ट्री को पहले से जो है ना, तो we want new construction of our own history. So this is very interesting thing for our community and for not our community, and also for the equality and justice movement in Indian subcontinent. ओके ओके। जी और मधुर मेरा मैम। और एक तो मेरा और एक तो सर क्वेश्चन एक था ही वो सवाल। Yes, सर एक ही सवाल ले ले सकता। Okay. जी पूछिए पूछिए। हाँ, एक ही सवाल है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जैन मंडल के बारे में मैं उतना कुछ नहीं जानता हूँ। इसको जानने के लिए कोई आर्टिकल या फिर कोई बुक अगर सजेस्ट करे तो अच्छा होता। Oh, if possible, you can message me. I will send you some documents. ओके ओके। जी मधुर मैम, आप अपना सवाल पूछिए। First of all, thank you, Professor Suvajit Mondal, for such an enriching talk. You have touched on the contribution of women's rights, but it's very unfortunate that today's women, they are not aware of Jane Mondal's contribution to women's rights. So I just want to know what are the major things that he has done so that I can research more on that. So can you just give me some points that these are the things that he has done? Okay, actually, he was closely associated with Babasaheb Ambedkar, and today's we seen various kind of rights in India. So, which kind of associated with J.N. Mandal when he was the law minister of interim government of India, he was associated with Babasaheb Ambedkar for forming a rights and equality for the Indian women. But unfortunately, partition was happened, and we seen what actually is. So I will provide you some document for your research or kind of thing. Okay, thank you. I'll contact you later. Okay. आई थिंक सबने सवाल पूछ लिया है। और कोई है तो हैंड रेज कर दीजिए। चंदन। Okay, thank you for giving me a chance. Actually, we are working on literature, indigenous literature in Odisha, from the Munlivasi Literature Club. I just remember that in 1943, J.N. Mandal has started a weekly magazine named Jagaran. So, what is the current status of that? I mean, is there any other magazine published by any Namasudra community people or our writers for the social awareness in Bengal, particularly for the Namasudra community? Yes, there are many literature in Bengal. So lots of you can. I will send you later. Okay, there are many things that you can take for your research. Okay, great. Thank you. आई थिंक सबका सवाल हो गया, तो अभी मैं आई थिंक चंदन हम वाइंड अप कर सकते हैं अभी। हेलो सर। हेलो। हाँ, हेलो।
हाँ सर, अगर टाइम है तो थोड़ा मेरा एक दो और क्वेश्चन है तो ले सकते हैं सर? हाँ हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ। यस यस। तो सर, सुभाजीत सर, Yes, yes. you see, when you talks about the Namasudra community of Bengal, Right. so from marginalized community, I think the most three prominent figure means you cannot separate them, Jain Mandal ji, then Motua movement. Right, right. So, yes. So can you put some lights on the connection between Jain Mandal and Motua movement like Guru Chan Thakur? सो दैट बिकॉज अभी क्या है, डंडे करने में ये सब जो हमारे मतुआ कम्युनिटी है, दे हाँ आर क्या है, वो मतुआ मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, सब Okay. होता है ये सब, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट मच द कंट्रीब्यूशन ऑफ मंडल. तो आई वांट टू नो द जैन मंडल कनेक्शन विद गुरुचंद ठाकुर एंड the impact of in their life, means what the momental impact Jogendra Mandal ji have in his life from Guruchand Thakur perspective. तो वो थोड़ा लिंक अप करने का जरूरत है हम लोगों को, अदरवाइज एक right. भाई ने जो क्वेश्चन किया है ना कि वी आर नॉट एबल टू रीच टू द आवर पीपल, Right, right. तो ये सब करना Yes. जरूरी है ग्राउंड पे जाने के लिए. तो So- ये आप जैसे यू आर एमर्जिंग रिसर्च स्कॉलर, तो मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट नंबर लेके आपसे बातचीत करता रहूंगा, और सो दैट हम इसको पहुंचा सकते हैं, मतलब हमारे हाँ. जमीन के ये करके बहुत जरूरी है. तो उसमें थोड़ा डिस्कशन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो डिस्कशन अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं फर्दर करूंगा आपके साथ पर्सनली. ओके ओके ओके, ओके ओके. ठीक है. जी डोना मैम. हाँ हेलो, मेरा नाम डोना है और मैं शुभजीत का काम को बहुत टाइम से देखी हूँ, तो मुझे उनका प्रोग्रेस पता है और बहुत अच्छा कर रहे हो. सो माय हार्टफेल थैंक यू टू यू फॉर डूइंग दिस वर्क. बट मुझे लग रहा है कि जैसे हम बहुत सारे टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम पे हमको कंटेम्पररी इश्यूज को भी कनेक्ट करना है. जैसे वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑलरेडी थोड़ा सा उनको मेंशन किया है कि कैसे मतुआ जो एंटी कास्ट मूवमेंट एक इमर्ज हुआ था, या अभी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उसको कैसे कनेक्ट करे. तो उसके साथ ही मैं अपना क्वेश्चन को एक्सटेंड करना चाहूंगी कि शायद इन फर्दर इन फ्यूचर में हमारा सबका एक काइंड ऑफ कोशिश रहेगा ये समझने के लिए कि अभी जो नवशूद्रों जो पार्टीशन से पीड़ित है, उन सब लोग जो रिलोकेट हुआ है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में भी है, कुछ यूपी में भी है और बाकी जगह में भी है, तो वहां से क्या हम देख सकते कि किनको किनको अभी एससी स्टेटस मिला है और नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो उसका रीजन क्या है, स्टेट वाइज भी अगर रीजन है तो क्या रीजन है, उसके साथ कनेक्ट करके देखने से शायद हम कुछ हद तक हमारा जो लीडर्स था उनका स्ट्रगल को हम थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाएंगे. तो या मेरा इतना ही सजेशन नहीं, बट इतना मतलब थैंक यू दी, थैंक यू था दी. कि उसके साथ कनेक्ट करके बोलना था. या थैंक यू. थैंक यू दीदी. Okay, Sanjay, we can conclude the session, right? Somaj is raising his hand. Actually, I can't read Bangla, so please ask your question. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो हिंदी में बात करूंगा या बांग्ला, आसामीज, इंग्लिश, पर हिंदी में बात करूंगा. सबसे बड़ी बात है आज का ये बात सुन के बहुत उत्साहित हुआ हूँ, और जिन्होंने बोला है उनको बहुत सारा शुक्रिया कि ऐसा सीजन करने के लिए. और मेरा कुछ सुझाव देने का, अभी तक इतने हालात में नहीं हुआ हूँ सुझाव दे सकूं, अभी भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और सबके साथ मिलके अगर कुछ करने का मौका मिले वही है. और मैं ये बोल के अपना जय भीम, जय भारत. थैंक यू. थैंक यू.
ज्ञान सर जी हैंड रेज किए हैं बहुत देर से। जी सर, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, जय भीम जय मंडल सर। सर बंगाल में हूँ सर। मैं वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर के पास ईसीएल में जॉब कर रहा हूँ। तो ओके यहाँ पे रहते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जब भी मंडल के बारे में सर मैं कहीं बात करने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ लोगों को, यहाँ के लोगों का व्यूज क्या है। लोग तो कुछ लोगों का मतलब ऐसा रहता है कि अरे उसके बारे में बात मत करो, बहुत ही मतलब खराब इतिहास है, हिस्ट्री है, हाँ इस तरह से बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। एक दो लोगों को मैंने पूछा, और उसमें से हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही कुछ लोग थे। हाँ हाँ तो इस तरह का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। और वेस्ट बंगाल में तो रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, लेकिन उनका सोशल मूवमेंट क्या था मुझे उतना ज्यादा नहीं पता है, शायद आपको पता होगा। लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे जानना है मंडल के बारे में, थोड़ा सा जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में। तो थोड़ा सा सर मुझे, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, आप थोड़ा सा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा या फिर कोई बुक रिकमेंड कर दीजिएगा। ओके ओके डेफिनेटली आई विल और शेयर। हाँ सर, हाँ, और मथुआ कम्युनिटी का जो ये एंटी कास्ट मूवमेंट है उसके बारे में भी जानना है सर, थोड़ा मुझे अच्छे से। ओके ओके हाँ आई थिंक अभी इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। नरोत्तम दा को मैं अनुरोध करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपना माइक ऑन कीजिए। जी नरोत्तम दा। ओके, थैंक यू संजय। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लोग बोलते हैं कि एक अंबेडकर थे, लेकिन मेरा मानना है कि दो अंबेडकर थे। एक बाबा साहेब थे और दूसरा जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगर वो दोनों एक नहीं होते तो मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोष नहीं पाते, संविधान लिख नहीं पाते, हमें अधिकार नहीं मिल पाता। इसलिए पहले तो मैं उन दोनों महापुरुषों के भाईचारे को मैं नमन करता हूँ, उन दोनों के दोस्ती को नमन करता हूँ, और साथ ही जोगिंद्रनाथ मंडल जी के अवदान और बलिदान को नमन करता हूँ। यस ओके, डेफिनेटली एमएसवाईएफ के सभी साथियों के तरफ से मैं सुभजीत मंडल सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और हमें महापुरुष जैन मंडल जी के बारे में बहुत ही खूबसूरती से, पूरे विस्तार से हमें बताया। इसलिए थैंक यू मंडल सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। और मैं हमारे साथी संजय को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को मॉडरेट किया। थैंक यू संजय। मैं साथ ही हेमंत दा को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कम समय में हमें मंडल जी और अंबेडकर जी के बारे में बताया, तो थैंक यू हेमंत दा। और फिर मैं बाकी सभी साथियों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ जुड़ के हमारे महापुरुष महाप्राण जोगिंद्रनाथ मंडल जी के सम्मान में आप सभी साथ आए। इसलिए आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू एवरीवन। जय भीम, जय मंडल। थैंक यू। जय मंडल। थैंक यू। जय भीम जय मंडल। गुड नाइट फ्रेंड्स। जय भीम जय मंडल। बाय।